स्वागत करुच्ची फ्रेंड्स आम चैनल तरफ मु सुब्रत एक न्यू वीडियो सहित फ्रेंड देखो ये आपर OSSTET जो आप एग्जाम टी 20 जनवरी ये कंडक्ट करने जाऊँगी तो ये बहुत सारा पिला आम क्लास कंप्लीट कर सारी सहित बहुत पिला क्वेरी आसाला सर आम जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर जहाँ सब बाकी क्वेश्चन सब रही है वीडियो नहीं आसतु तो फ्रेंड देखो ये आप प्रीवियस ईयर 2024 जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर जहाँ भी सब क्वेश्चन ये आसाला आउ थे आपको रिवाइज कर दो देखो देखो प्रथम क्वेश्चन टी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इनफॉरमेशन into our already existing knowledge is known as dash प्रथम ऑप्शन को accommodation सेकंड को assimilation थर्ड को adaptation फोर्थ को equilibration तो ऑप्शन 4 मधुर करेक्ट आंसर हिबो जे assimilation होची आपनकर करेक्ट आंसर assimilation डेफिनेशन ही होची जे कि आपनकर जोटा कि एटा गोटे प्रोसेस जोटा कि आपनकर न्यू इनफॉरमेशन को निया जिवो जदि आपनकर ऑलरेडी एक्जिस्टिंग नॉलेज अछि तो एटा को कहा जिवो assimilation तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 102 नंबर क्वेश्चन रे आपन कोन कहछि हु इज नोन फॉर हिज सोशियो कल्चरल थ्योरी देखंतु कि आपन मानकर जो सोशियो कल्चरल थ्योरी पय फेमस तो प्रथम ऑप्शन कहछि चार्ल्स रॉबर्ट्स ऑप्शन 2 कहछि जीन पिगार्ड्स ऑप्शन 3 कहछि लेव विगो जेटा कि विगोट्स्के ऑप्शन 4 कहछि नन ऑफ दिस तो ऑप्शन 4 मात्र करेक्ट आंसर हेबो तो लेव एटा आपन मानकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लेव विगोट्स्के ऑब्वियसली आपन कर एठी करेक्ट आंसर हेबो नेक्स्ट देखंतु 103 नंबर क्वेश्चन टी which concept was introduced in the progressive school of Britain तो आपण देखंतु एटा आपनकर केउ आपनकर कांसेप्ट एटा आपनकर प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ ब्रिटेन द्वारा इंट्रोड्यूस कर जायतला तो प्रथम ऑप्शन को स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑप्शन 2 को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तो ऑप्शन 4 मात्र करेक्ट आंसर हेबो कंटीन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होछ आपनकर करेक्ट आंसर जोटा कि CCE इज द सिस्टम एटा जोटा कि असेसमेंट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड एटा अपन मानकर वेरियस एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट रे तो जोटा कि आपनकर होलिस्टिक व्यू ऑफ द लर्नर्स प्रोग्राम पई एई आपनकर जो आपनकर प्रोग्रेस ए जो प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ ब्रिटेन द्वारा ए कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा जायतला नेक्स्ट आप देखंतु 104 नंबर क्वेश्चन टी व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग विषय रे केउ स्टेटमेंट करेक्ट होय तो प्रथम ऑप्शन कहछि इट इज जोटा मॉडिफिकेशन इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑप्शन 2 कहछि आउटकम्स of it provide experiences it is reflects option D कहछि it affects general behavior तो correct answer हेबो it is reflects option C एठी correct answer हेबो नेक्स्ट आप देखंतु 105 नंबर क्वेश्चन टी 105 नंबर क्वेश्चन कहछि stimuli that increase probability of जोटा कि desirable responses of the learners is known as dash देखंतु stimuli that increases probability of desirable responses of the learners is known as dash तो ऑप्शन 4 कहछि प्रथम कहछि reinforcement सेकंड कहछि explanation थर्ड कहछि illustrating with example फोर्थ कहछि stimulus variation तो ऑप्शन 4 मधुर एटा अपन मानकर करेक्ट आंसर एटा अपन मानकर हेबो देख परतुए तो ऑप्शन नंबर जोडा कि ए reinforcement होछि अपन एठी करेक्ट आंसर हे नेक्स्ट एटा अपन 106 नंबर क्वेश्चन देखंतु 106 नंबर क्वेश्चन टी कहछि हु फॉर्मुलेटेड नंबर ऑफ like postulates with which explain the intervening variable essential for learners तो ऑप्शन 4 कहछि कलर स्किनर हॉल देन टोलमैन तो ऑप्शन 4 मधुर करेक्ट आंसर हेबो जे कि हॉल होज आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन कहछि which of the following statement is correct about how where pigat and zygotes की similar देखंतु दुई जन जो सिमिलर पई केउ आपनकर स्टेटमेंट करेक्ट देखंतु प्रथम ऑप्शन कहछि both say cultural differences have effect on development second question both suggest development is universal both acknowledge the role of peer interaction with development फोर्थ question none of the above तो ऑप्शन 4 मधुर एटा अपन मानकर करेक्ट आंसर हेबो देखंतु ए दुई जन मत अनुसार केउ अपन स्टेटमेंट करेक्ट तो ऑप्शन सी होजी करेक्ट बोथ acknowledge the role of peer interaction in the development तो ऑप्शन सी एठी करेक्ट आंसर हेबो तापर देखंतु 108 नंबर क्वेश्चन टी 108 नंबर क्वेश्चन टी कहछि जोन ऑफ जोटा कि proximal development ZPD is associated with the theory of dash देखो का theory से एटा कनेक्टेड प्रथम ऑप्शन कहछि लेव वाइगोट्स्की सेकंड कहछि चार्ल्स रोबर्ट्स ऑप्शन 3 कहछि जीन पिगार्ड ऑप्शन डी कहछि बीएफ स्किनर ऑप्शन 4 मतलब करेक्ट आंसर हेबो जेटा कि लेव वाइगोट्स्की ऑप्शन नंबर ए एठी करेक्ट आंसर हेबो नेक्स्ट देखंतु 109 नंबर क्वेश्चन टी 109 नंबर क्वेश्चन कहछि लर्निंग इज एन association between stimulus and dash देखो ये जो अपन लर्निंग रही है अपन क्या भितर अपन माने ये क्या सहित एसोसिएटेड क्या भितर प्रथम ऑप्शन कहछि एनिमल एंड पास्ट एक्सपीरियंस सेकंड कहछि रेस्पॉन्स ऑप्शन 3 कहछि बिहेवियर तो ऑप्शन 4 मधुर एटा अपन मानकर करेक्ट आंसर हेबो जे ऑप्शन नंबर सी रेस्पॉन्स होछि अपन एठी करेक्ट आंसर
response जोटा कि learning is defined as এটা association behave जोटा कि between a stimulus and response होची आपनकर एठी correct answer रहइबो learning एटा आपनकर full definition stimulus and आपनकर response next तापर देखंतु 10 नंबर क्वेश्चन टी 110 क्वेश्चन टी when infants think by means of their sense and motor acting in the stage of dash देखंतु when infants think by means of their sense and motor acting in the stage of dash केउ स्टेज रे से आपन मानकर एटा आपनकर infant माने think करती by means of their sense and motor acting stage option 4 टी प्रथम को sensory motor period second को pre operational period third को concrete operational period fourth को formal operational period तो ऑप्शन 4 मधुर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जोटा कि सेंसर मोटर पीरियड होछ ऑप्शन नंबर ए टी करेक्ट आंसर रहइबो देन तापर देखंतु 111 नंबर क्वेश्चन टी each institution have its own long term and short term plans is known as dash देखंतु प्रत्येक इंस्टीट्यूशन रो गोटे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान अछि तो ताको कोन कहा जाय तो ऑप्शन ए कहछि एकेडमिक प्लानिंग देन करिकुलर प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग तो ऑप्शन 4 मधुर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होछ आपनकर एठी करेक्ट आंसर रहइबो देन तापर 112 नंबर क्वेश्चन देखंतु 112 नंबर क्वेश्चन कहछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पिलर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ फ्रेडिक जो कि टेलर जो कि फ्रेडिक टेलर को अनुसार है आपनकर केउटा गोटे पिलर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल रो नुहे ऑप्शन ए को सक्सेस इन द गिवन वर्क सेकंड को रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड सैलरी थर्ड को रेस्पेक्टेबल बिहेवियर ऑप्शन डी को डिफिकल्टी लेवल ऑफ द गिवन वर्क तो ऑप्शन 4 मात्र करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ताकि डिफिकल्टी लेवल ऑफ गिवन वर्क को आपन एठी करेक्ट आंसर रहइबो ऑप्शन नंबर डी एठी आपन एठी करेक्ट आंसर रहला नेक्स्ट एठी आपन 113 नंबर क्वेश्चन देखंतु 113 नंबर क्वेश्चन कहछि व्हिच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द कोर्स टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स जोटा कि मास्टरी ऑन द कोर्स देखंतु केउ टाइप रे आपन इवैल्यूएशन एठी आपन यूज करा जाय कोर्स रो एंड रे माने डिटरमाइन करिया पई स्टूडेंट्स जोटा कि मास्टरी ऑफ द कोर्स प्रथम ऑप्शन कहछि प्लेसमेंट सेकंड कहछि डायग्नोस्टिक थर्ड कहछि फॉर्मेटिव फोर्थ कहछि समेटिव तो ऑप्शन 4 मध्ये करेक्ट आंसर हेबो समेटिव होछ आपन एठी करेक्ट आंसर हेबो जोटा कि समेटिव इवैल्यूएशन एटा जोटा कि यूज करा जाय कोर्स रो एंड रे ताको आपनकर एठी आपनकर कोर्स एंड रे एटा आपन मेजर करा जाय डिटरमाइन करा जाय जो आपनकर स्टूडेंट जो स्टूडेंट टी मास्टरी करछि कोर्स रे कि नहीं तो जानिया पई एटा कोन समेटिव आपनकर होछि करेक्ट आंसर हेबो तो ऑप्शन नंबर डी एठी करेक्ट आंसर हेबो तापर देखंतु 114 नंबर क्वेश्चन टी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो आपनकर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रहिछि तार माने कोन ऑप्शन ए कहछि इट रेफर्स टू द scholastic aspect option 2 कहछि it refers to co-scholastic aspect option 3 कहछि it refers to both scholastic and co-scholastic aspect option D कहछि it refers to continuous process तो ऑप्शन 4 मात्र करेक्ट आंसर हेबो it refers to both scholastic and co-scholastic aspect होछि करेक्ट आंसर हेबो तापर देखंतु नेक्स्ट आपनकर 115 क्वेश्चन टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थियोरीज इज रिलेटेड टू लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस जो आपनकर केउ थियोरी आपन मानकर रिलेटेड होइछि लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस तो केउ थियोरी से तो कनेक्टेड प्रथम ऑप्शन कहछि ओरिएंटेशनल कंडीशनिंग सेकंड कहछि इनसाइट लर्निंग ऑप्शन 3 कहछि क्लासिकल कंडीशनिंग फोर्थ कहछि कॉग्निटिव लर्निंग तो ऑप्शन 4 मात्र करेक्ट आंसर ऑप्शन ओरिएंटल कंडीशनिंग होछि आपनकर एठी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एठी करेक्ट आंसर हेबो 116 नंबर क्वेश्चन देखंतु द टर्म स्कीम describe the term schema describe dash देखंतु कोन एसिटी describe करे प्रथम ऑप्शन कहछि मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन सोशल कंडीशन इमोशनल एक्शन फोर्थ कहछि नॉन ऑफ द अबव तो ऑप्शन 4 मात्र करेक्ट आंसर हो मेंटल एंड फिजिकल एक्शन होछ आपन एठी करेक्ट आंसर हेबो तापर देखंतु 117 नंबर क्वेश्चन टी लॉ ऑफ जोटा कि रेडीनेस ऑफ लर्निंग रेफर्स टू डैश देखंतु लॉ ऑफ readiness of learning refers to dash काहा को एठी अपन मान को रेफर करछि प्रथम ऑप्शन कहछि repetition of learning second कहछि satisfaction of learning तीन कहछि ready to learn ऑप्शन डी कहछि reoccur when situation is repeated तो ऑप्शन 4 मतलब करेक्ट आंसर हेबो एठी अपन मान कर ऑप्शन नंबर सी ready to learn होछ अपन एठी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एठी करेक्ट आंसर हेबो नेक्स्ट तापर देखंतु 118 नंबर क्वेश्चन टी लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड ग्रोज with the increase of age which condition of the learning refers to do एटा अपन देखंतु केउ आपनकर कंडीशन एठी आपन लर्निंग रेफर काहा करे तो प्रथम ऑप्शन कहछि एटा आपनकर रेडीनेस सेकंड कहछि मैच्योरेशन थर्ड कहछि मोटिवेशन फोर्थ कहछि नॉन ऑफ द अबव तो ऑप्शन 4 मतलब करेक्ट आंसर हेबो ऑप्शन नंबर बी मैच्योरेशन हो जेटा कि मैच्योरेशन हो आपनकर एठी करेक्ट आंसर हेबो नेक्स्ट एठी आपनकर 119 नंबर क्वेश्चन देखंतु 119 नंबर क्वेश्चन कहछि जो जो कि थ्रोन्डिक्स लॉ माने केउ थ्रोन्डिक्स रो केउ लॉ आपनकर बेस्ट करे बेस्ड ऑन लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज तो ऑप्शन 4 मात्र केउ लॉ आपन मानकर केउ लॉ अपन थ्रोन्डिंग रो
कि बेस कर लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑप्शन ए को लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ नॉन ऑफ द अबव तो ऑप्शन चार्ट मध्य लॉ ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन नंबर सी एठी करेक्ट आंसर हेबो तापर देखंतु 120 नंबर क्वेश्चन टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर व्हिच असिस्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग आपनकर केउ आपन मानकर फैक्टर जोटा कि आपन असिस्ट करे ए जो प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग पई ऑप्शन ए को सिग्निफिकेंस प्रॉब्लम एटीट्यूड अल्टरनेटिवनेस ऑल ऑफ द अबव तो ऑप्शन चार्ट मध्य करेक्ट आंसर हेबो एटा आपन मानकर सिग्निफिकेंस जो आपन एठी करेक्ट आंसर हेबो तापर देखंतु 121 नंबर क्वेश्चन टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द स्कूल डेवलपमेंट प्लान देखंतु एटा आपनकर जो आपनकर जे रहिछि स्कूल डेवलपमेंट प्लान पई केउ आपन मानकर स्टेटमेंट एठी करेक्ट नहे तो प्रथम ऑप्शन कहिछि इट इज मेड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट सेकंड कहिछि it is made by school at local level option d कहिछि it is made for the development of school infrastructure option d कहिछि it is made with the constitution of local community तो ऑप्शन चार्ट मधुर एटा आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इट इज मेड बाय कंसर्न गवर्नमेंट होछ आपनकर एठी करेक्ट आंसर रहइबो तापर देखंतु 122 नंबर क्वेश्चन टी of all the different factors which influence the quality of education and its contribution to natural development, the quality, competence and character of the teacher are undoubtedly and most significant. Who said it? एक आपनकर किए ए स्टेटमेंट कहितले तो प्रथम ऑप्शन कहि देख परथबे सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन सेकंड कहिछि एजुकेशन कमिशन 1964 to 65 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 थर्ड फोर्थ कहिछि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑप्शन चार्ट मध्य करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन कमिशन 1964 टू 1965 जे कि ए आपनकर ए स्टेटमेंट टी एटा आपनकर एठी कहिथिले तो करेक्ट आंसर हेबो जेटा कि ऑप्शन नंबर एठी आपनकर बी कि एजुकेशन कमिशन 1964 65 होछ आपनकर एठी करेक्ट आंसर हेबो तापर देखंतु इन व्हिच ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देखंतु के मसिया रे आपनकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एटा आपन रीनेम हेतला मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो ऑप्शन चार्ट मधुर एटा आपन मानकर देखि पारथुए 1982 1983 1985 1989 तो ऑप्शन चार्ट मधुर करेक्ट आंसर हेबो देखि 1900 एटा आपन मानकर ऑप्शन 85 85 1985 होछ आपन एठी करेक्ट आंसर हेबो तापर देखंतु 124 नंबर क्वेश्चन टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल एकेडमिक विजिट जोटा कि एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन मैटर रिलेटिंग टू स्कूल एजुकेशन देखंतु केउटा आपन गोटे प्रिंसिपल एकेडमिक एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन द मैटर ऑफ रिलेटिंग टू स्कूल एजुकेशन देखंतु स्कूल एजुकेशन एटी आपनकर रिलेट जोटा जडित केउटा आपनकर करेक्ट आंसर हेबो तो प्रथम ऑप्शन कहि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन सीएपीए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यूजीसी देन तापरे नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑप्शन चार्ट मधुर एटा आपन करेक्ट आंसर हेबो ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन सीएबीई होज आपन एठी करेक्ट आंसर हेबो नेक्स्ट आप देखंतु 125 नंबर क्वेश्चन टी एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज वेरी क्रुशियल इन जोटा कि एक्चुअलाइजिंग द गोल्स देखंतु एटा आपनकर जो आपन मानकर राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट राटी जोटा कि राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट अनुसार केउ आपन मानकर कमिशन जोटा कि केउ कमिटी वेरी क्रुशियल इन एक्युरेटिंग जोटा कि एक्चुअलाइजिंग द गोल्स तो एक्चुअलाइजिंग गोल पई केउ कमिटी आपनकर बहुत इंपोर्टेंट तो ऑप्शन ए कहिछि आपन मानकर विलेज लेवल कमिटी सेकंड कहिछि स्कूल मैनेजमेंट कमिटी पेरेंट टीचर एसोसिएशन मदर टीचर एसोसिएशन तो ऑप्शन चार्ट मधुर करेक्ट आंसर हेबो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी होछ आपन एठी करेक्ट आंसर हेबो तापर देखंतु डैश परसेंटेज that percent of total member shall constitute quorum for the parent teacher association meeting देखंतु केते नंबर आपनकर माने मेंबर प्रेजेंट होबा दरकार केते परसेंटेज रो टोटल मेंबर shall consist quorum फॉर द पेरेंट टीचर एसोसिएशन पई केते जन को मेंबर को उपस्थित होबा दरकार बा केते परसेंटेज उपस्थित होबा दरकार तो ऑप्शन चार्ट मधुर करेक्ट आंसर हेबो 25% होछ आपन एठी करेक्ट आंसर हेबो 27 नंबर देखंतु व्हिच validity of the test is जोटा कि established by determining whether the test item adequately sample the skill and subject matter of the course तो देखंतु which validity of a test is जोटा कि estimate जोटा कि established by determining whether the test items adequately sample and the skills and subject matter of the course देखंतु केउ आपनकर टेस्ट वैलिडिटी करे तो ऑप्शन चार्ट कहि प्रथम कहि फेस वैलिडिटी एम्पिरिक जोटा कि एम्पिरिकल वैलिडिटी कंटेंट वैलिडिटी फैक्टोरियल वैलिडिटी तो ऑप्शन चार्ट मधुर करेक्ट आंसर हेबो कंटेंट वैलिडिटी ऑप्शन नंबर सी एठी करेक्ट आंसर हेबो ए pupils composite of or average educational achievement on a battery of achievement tests
of school subject is called as dash as his dash तो ऑप्शन ए कहछि mental age educational age chronic chronological age ऑप्शन डी कहछि attainment age तो ऑप्शन 4 टी मधुर करेक्ट आंसर हेबो educational age होछि आपनकर एठी करेक्ट आंसर हेबो देन तापर 38 नंबर देखंतु which type of education management is more important than other in the following देखंतु केउ टाइप रो एजुकेशन मैनेजमेंट इज बहुत इंपोर्टेंट तो ऑप्शन ए कहछि जोटा कि ऑथोरिशियन ऑप्शन डी कहछि इंटरनल एजुकेशन मैनेजमेंट थर्ड कहछि सेंट्रलाइज एजुकेशन मैनेजमेंट फोर्थ कहछि एक्सटर्नल एजुकेशन मैनेजमेंट तो ऑप्शन 4 मधुर करेक्ट आंसर हेबो इंटरनेशनल एजुकेशन मैनेजमेंट ऑप्शन नंबर बी एठी करेक्ट आंसर हेबो नेक्स्ट एठी आपनकर 130 नंबर क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आई स्टाइल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एटा आपनकर आई स्टाइल रो एजुकेशन मैनेजमेंट केउटा ऑप्शन ए कहछि ऑटोक्रेटिक ऑप्शन 2 कहछि डेमोक्रेटिक ऑप्शन 3 कहछि डिसेंट्रलाइज देन आपनकर क्रिएटिव तो ऑप्शन 4 मधुर करेक्ट आंसर हेबो ऑटोक्रेटिक होछि आपनकर करेक्ट आंसर हेबो नेक्स्ट आपनकर 131 नंबर देखंतु व्हिच वन इज एन ऑथोरिटिशियन लेवल ऑफ टीचिंग देखंतु आपनकर एठी ऑथोरिशियन आपनकर लेवल ऑफ टीचिंग केउटा ऑप्शन ए कहछि टीचर सेंटर ऑप्शन 2 कहछि चाइल्ड सेंटर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सेंटर तो ऑप्शन 4 टी मधुर करेक्ट आंसर हेबो टीचर सेंटर होछि आपनकर एठी करेक्ट आंसर हेबो तापर देखंतु 132 नंबर क्वेश्चन टी व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट टीएलएमएस जो टीएलएमएस तरफरु केउ आपनकर स्टेटमेंट करेक्ट नहे प्रथम ऑप्शन कहछि इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी of subject matter it helps in developing interest it option 3 कहछि develops understanding about content option D कहछि none of the above तो ऑप्शन 4 मधुर करेक्ट आंसर हेबो एटा आपन जो टीएलएमएस विषय करेक्ट केउटा आपनकर नॉट करेक्ट एटा ऑप्शन नंबर डी होछि none of the above ए सब आपन मनकर करेक्ट none of the above होछि करेक्ट आंसर हेबो 133 क्वेश्चन देखंतु इमोशनल रेस्पॉन्स टू सिंबॉलिक स्टिमुली इज प्राइमरीली द रिजल्ट ऑफ डैश देखंतु 133 नंबर क्वेश्चन टी इमोशनल रेस्पॉन्स टू सिंबॉलिक स्टिमुली इज प्राइमरीली द रिजल्ट ऑफ डैश तो ऑप्शन 1 कहछि मैच्योरेशन ऑप्शन 2 कहछि लर्निंग ऑप्शन 3 कहछि एडजस्टमेंट ऑप्शन डी कहछि इंक्रीज सेंसरी परसेप्शन तो ऑप्शन 4 कहछि ता भीतर ऑप्शन 4 के मतलब करेक्ट आंसर हेबो लर्निंग होछि आपनकर एठी करेक्ट आंसर हेबो तापर देखंतु 134 क्वेश्चन टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर अफेक्टिंग रिटेंशन तो आपनकर फैक्टर फॉर अफेक्टिंग रिटेंशन केउटा नुहे तो ऑप्शन 4 कहछि प्रथम कहछि इंटरफेरेंस ऑप्शन 2 कहछि रीऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन 3 कहछि elapsed टाइम ऑप्शन 4 कहछि ऑल ऑफ द अबव तो ऑप्शन 4 मधुर करेक्ट आंसर हेबो ऑल ऑफ द अबव होछि आपनकर एठी करेक्ट आंसर सो फ्रेंड एटा थला आपन मानकर ओएसएसटीटी रो जो आपनकर ओएसएसटीटी रो जो आपनकर एग्जाम होबाक जाउछि ता ऊपर एटा आपनकर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ऊपर तापर नेक्स्ट आबे नेक्स्ट पार्ट रे हम आउ सारा क्वेश्चन अछि आपन माने बहुत सारा करे होछि सर हम आउ सारा क्वेश्चन सब नै आसुंतु प्रीवियस ईयर आउ सारा क्वेश्चन अछि आपन माने आउ सारा क्वेश्चन डिस्कशन करे देबी वीडियो को से जदी पसंद आस्तिबो तो लाइक कर दियंतु चैनल जदी सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एबे लेटेस्ट अपडेट पाया पे हम चैनल से जोड़ी रहंतु नेक्स्ट वीडियो रे आपन से देखा हबो से टेक केयर एंड